Hi everyone, I am Priyanka and you are watching Organizopedia. So in today's video, I'm going to show you another makeover and this time it's going to be my bedroom's makeover. So I will start this video by showing you how this room actually looks before we gave it a makeover. As we enter into the room, there is a full-length wardrobe. थोड़ा सा हम और आगे आते हैं तो there is a space for bed and behind the bed there is a grey color wall. थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो that space actually we try to make it a cozy sitting area. बेसिकली हमें ये स्पेस जब बिल्डर ने प्रोवाइड करा था तो इट इज सपोज टू बी अ वार्डरोब और अलमेरा के जैसा. एंड थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो देयर इज अ फुल लेंथ विंडो और डोर जो बालकनी में ओपन होता है और बेड के सामने हमारा आता है स्टडी यूनिट या फिर टीवी यूनिट. सो दिस इज हाउ दिस रूम एक्चुअली लुक्स लाइक. So first of all, if I will talk about this wall, so इस wall पे जो color है that is a grey color. उस colors के details सारे description box में हैं, आप वहाँ से check कर सकते हैं. So we got this wall painted like 2 years back in 2018 only and it was pretty much in a good condition and I don't want to repaint it again. Next उसके बाद में मैंने इस वॉल के ऊपर एक व्हाइट कलर का ये कार्विंग वाला एक फ्रेम लगाया है बिकॉज व्हाइट एंड ग्रे गोज वेरी वेल विद ईच अदर. सो ये है. नेक्स्ट हमने इस बार कुछ और भी चेंजेस करे हैं जो आप देख भी सकते हैं. As we are giving our bedroom a makeover and this time we thought why not to change our old mattress also. It was quite a great coincidence that I got a call from Emma and they have sent me their mattress from orthopedic range. And when I first received this box, I was so fascinated and curious to know how a heavy king-size bed mattress, which measures 72 inch by 72 inch, can properly fit in the small box. So for me, it was very interesting to know how is it possible. So let's unbox it together. So with the mattress you get this kind of a knife or a blade ताकि आप प्लास्टिक आराम से काटें without ruining the mattress. So सबसे पहले वेलक्रो वाले जो स्ट्रैप्स थे उनको अनस्ट्रैप करा और इसके ऊपर उन्होंने एक लेमिनेशन शीट चढ़ाई हुई थी उसको हटाया. इसके बाद में मैंने उस ब्लेड की हेल्प से जो प्लास्टिक है आप देख रहे हैं उसे धीरे धीरे कट किया एंड हाउ इट इन्फ्लेट्स. ये हार्डली लाइक 2-4 मिनट के अंदर अंदर अपना शेप लेना स्टार्ट कर देता है. Now if I will talk about Emma Mattress, they have variety of range for single bed, double bed, queen size, king size. You can even get different variety of pillows also available at their website. Now if I will talk about how this mattress is engineered, so इसको बनाया गया है memory foam से. Memory foam is very good. जब भी आप इस बेड के ऊपर यानी इस मैट्रेस के ऊपर जब भी आप सोते हैं तो जो भी आपका एक स्लीपिंग पोस्चर है ये उतना ही डिप्रेस होता है और आपके पोस्चर के हिसाब से ये शेप ले लेता है जो कि आपके बैक में बिल्कुल भी पेन नहीं होने देगा. The mattress which I have received is orthopedic mattress which is 100% guaranteed that आपको बैक पे कोई भी पेन नहीं होगा जब आप इस मैट्रेस के ऊपर सोते हैं. This mattress comes with a protective cover. जब भी आपको लगता है कि आपका जो ऊपर की कवरिंग है वो खराब हो रही है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं and you can wash it. एक और जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है Emma Mattress also isolate motion transfer very well and does not produce any noise when wearing the weight, which makes it very suitable for couples. So now one more important thing जो कि आजकल हम सब ने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है and which is very good. Before we buy anything offline or online, we now focus more that product should be made in India. If I will talk about Emma Mattress, this mattress is engineered in German and it is made in India. अगर आपको मैट्रेस खरीदना है and if you are like me जो कि made in India को ज़्यादा प्रमोट करता है then you can definitely think about this mattress because it is made in India. Now you will get 100 nights trial offer. अगर आपको 100 दिन के अंदर अंदर ये मैट्रेस पसंद नहीं आता है then you can return it and you will get 100% refund for your mattress. You get 20 years warranty with the mattress and hassle-free delivery also. You can order Emma Mattress from any e-commerce site like Amazon, Flipkart, or you can directly order it from their website. I'm going to provide all the links like from where you can buy it directly in the description box. So if you guys are interested in buying this mattress, so find the link in the description box below. So now our bed and mattress is ready. It's time to furnish it with a bed sheet.
You can throw as many pillows you want to make yourself comfortable on your bed. So now it's time to see how I have created that corner. So उसके लिए सबसे पहले मैंने यूज करा इस तरीके का एक जूट रोप जिसको मैंने ब्रेड करा है ताकि वो थोड़ा सा थिक हो पाए जब मैं उसके ऊपर कर्टन हैंग करूं। कर्टन्स के लिए मैंने यहाँ पर यूज करे हुए हैं 2 नेट के कर्टन्स जो ऑलरेडी मेरे घर पर अवेलेबल थे। Now I have used 2 nails to hang this rope और इसके ऊपर मैंने कर्टन को अच्छी तरीके से हैंग कर दिया है। Now it is time to furnish it. So उसके लिए मैं इस मैट्रेस के ऊपर एक पुराना दुपट्टा जो है वो रैप कर रही हूँ ताकि बैठने के लिए एक अच्छा सा सिटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो पाए। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं, चाहे वो फ्लोर के ऊपर हो या कुछ इस तरीके से, ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट एरिया मोर कंफर्टेबल बाय थ्रोइंग सम पिलोज ओवर देयर। सो कुछ पिलोज और कुशन्स आप वहां रखकर उस एरिया को और भी ज्यादा कोजी एंड कंफर्टेबल बना सकते हैं। सो लेफ्ट एंड राइट साइड पर इन कर्टन्स को और भी सुंदर सा एक लुक देने के लिए मैंने 2 कमांड हुक इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फिक्स करे हुए हैं। एंड हियर एज यू कैन सी यू कैन टक दिस कर्टन्स इनसाइड द कमांड हुक्स। सो इस तरीके से हमारा जो एक कोजी सा कॉर्नर है वो रेडी हो गया। Now it's time to decorate the bedside table. Simply kept night lamp on both the side table, decorated it with plant on one side and scented candle on the other in order to have some space for keeping belongings in the night. और इस वॉल को और भी ज्यादा कंप्लीट लुक देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर एक प्लांट जो कि मैंने कोजी कॉर्नर और बेडसाइड टेबल के बीच में रखा हुआ है। दिस इज फिलेडेंड्रॉन सीलम। और इस साइड पर इसको और भी ज्यादा कोहेसिव बनाने के लिए मैंने यूज करा है एक DIY मैक्रामे प्लांट होल्डर जिसपे मैंने स्पाइडर प्लांट रखा हुआ है जिसको मैंने वॉल के ऊपर हैंग करा है बिकॉज आई वांटेड टू मेक दिस एरिया लुक ओपन एंड एक्सेसिबल। आपको ये वीडियो पसंद आए या ना आए, प्लीज एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कहाँ अच्छा लगा और कहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। To decorate the study table, I use books on different levels, some decorative items, some plants. Here in this box, I kept Remo for the karwa. So this is how I try to keep my study unit very simple because this is the area where I work and I don't want to put a lot of things in here ताकि मेरे लिए उसको clean करना या उस area को थोड़ा सा और organize करना difficult हो जाए। In the morning, I see the sunny sky. So now if I will talk about the right side of my study table, I have this area जो कि खाली है and अब मैं यहाँ पर कोई भी तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो क्रिएट नहीं करना चाह रही थी बिकॉज वी हैव सो मेनी सिटिंग स्पेसेस अवेलेबल इन माय बेडरूम। सो वी ट्राई टू कीप दैट एरिया वेरी सिंपल। हमने सिर्फ वहां पर कुछ छोटे बड़े जो फ्रेम्स हैं उन्हें वॉल के ऊपर हैंग कर दिया विद द हेल्प ऑफ नेल और एक कोलाज बनाया। So now this wall looks absolutely fine with the frames. Now is the time to decorate the floor as well. So here I am keeping this Erica palm at this corner just to bring a little more greenery and a livelihood. And instead of putting a chair or anything like that, हमने एक छोटा सा मूढ़ा रखकर उसके ऊपर पिलो और जो कुशन्स हैं उनको थ्रो कर दिया है ताकि थोड़ा सा और भी ज्यादा comfy और cozy लगे। So here on the table top at the left side is transparent vase में एक मनी प्लांट जो है वो creeper में यहाँ पर रख रही हूँ just to manage the ratio and proportion very well. So we have this space also at the right side of the study table. वॉल के ऊपर मैंने इस तरीके के मिरर क्राफ्टेड फ्रेम्स लगाए हैं और फ्लोर के ऊपर हमने एक इस तरीके का रॉट आयरन स्टूल रखा है जिसके ऊपर मैंने एक जूट प्लांटर में क्रोटन रखा हुआ है। एंड नीचे की तरफ मेरे पास में ये ग्लास जार था सिरेमिक, उसमें मैंने अपने कुछ आर्ट सप्लाईज रखे हुए हैं जैसे ब्रश एंड ऑल, और इस तरीके से कुछ हमने इस एरिया को बहुत सिंपल तरीके से डेकोरेट किया। And now is the time for before and after and the final reveal. In the morning, I see the sunny sky. As I wake, I look my darling in the eye. I tell her, wait, before I tell you this. My heart loves you, but something's gotta give. I just keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should be. But I just can't let it rest, 'cause you're complaining when you speak. I can no longer keep giving what I need.
my mama what she thinks of you. She tells me if I stay here, I am just a fool. I realized I was filling a hole inside your soul, instead of filling mine a long time ago. So I keep on saying yes, 'cause you want me to be with you and what it seems like we should So I be. really hope कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. And if you like today's video, then please do subscribe. Share this video with your friends and family. Like the video, and I'll see you next time. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.